So, Finza, there are a lot of questions in my mind. I hope that you'll not be bored out of that because I ask a lot of questions. I hope that's not a problem. Absolutely not, sir. Okay. So, Finza, tell me one thing. Out of all the five subjects that you have, is there anything that appeals to you as a person? Sir, I guess Sorry, eco. economics. Okay. Now, in economics, okay, although you've just started, obviously, but in economics, what is it that you're liking most? No, Is it sir, the I had economics in ninth and 10th as well. okay, okay, okay. Yeah, so I studied it before. So which part of economics do you like most? Is it the micro or the macro, or is it the numerical part that you like more? What is We it that you're haven't bifurcated it yet. sorry? We haven't bifurcated it yet. Okay, okay, okay. But Economics. what is it that appeals to you in economics? So, like some of the concepts about banks, it was really interesting to me in 10th grade. Central banks, commercial banks. So, I like to know about that stuff. Then inflation, like these are the topics I like. It I find it interesting. Okay. Uh, in terms of your extracurriculars in between class ninth to 11th, okay, what have been your major achievements? So one of the major achievements was that I volunteered. Um, it was a social service, and we raised up to 40,000 to educate children. That was one. That is one. Anything else apart from that? Then so I participated in many competitions, whether there were school competitions or there was this Swami Vivekanand Youth Parliament. They had launched their quarantine week in 2020. They had 3 quarantine weeks and they had like 4 competitions under each week. So I participated in all of them Wow, and I won some accolades as well. great, great. So that's good going. Actually, now a question to the parents also that you've been seeing Finza all these years. So there are a lot of things about Finza that you would have noticed. Okay, probably her nature, her way of thinking about things, her way of studies, her temperament. So if you can just give me a few ideas, a few things about Finza that you've been able to observe in all of these years, that will give me a huge amount of idea about Finza. In my view, like she is more like the administrative person. She, in my, maybe I'm wrong or right, she likes to do the like the desk work more, desk work. She's not a field person. She likes to have the reasoning part. Like she likes to lead the team. This is what I've noticed in her behavior, in her thinking. She's not the kind of person who wants to move, not the move around, but she's a good, like she can move around for enjoyment, for joy, but not for more of the work. The work should involve, the work should involve the travel part also, like the you can say the what do you call the leisure part. So she's more of desk person. She can sit on the desk for a long time, and she can analyze the things. She can do the reasoning, like if you give her any kind of case study for any kind of business, like what is the reason behind of this uh, case study, so she can do a lot in that. Okay. And Okay. moreover, she is a good orator. She is a good observant, uh, and she likes to speak more. This is what I have Great, noticed. great. So a lot of professional skill sets have been recognized by dad already. Great. No, no, maybe, Good. maybe I'm wrong. Maybe I'm Nay, wrong. nay, nay, you're absolutely fine. Please. Yes, ma'am. Your Yeah. turn now. So, like, she has good leadership skills, Uh-huh. and she's already done one course also, this leadership one.
in ninth grade, Mhm. and she did a little bit of three months internship also with that lady. So and she likes to do things with heart. Like right now, just in this COVID, so she was working as a um, front worker, like basically she was searching for the leads, and she was very like day and night she was working on it. Great. Yeah. And she has never sat on bed, and this is I'm just telling you from my point of view, she's never sat on bed, in these years. Like she's always on her desk. She can sit for like 12 hours on one chair and work, and she studies hard. Yeah, but गर्दन time, जा रही है नहीं. Acha. So that implies both of you. If I combine the statements, it implies that Finza is more of a research-centered person, Correct, correct, yeah. correct, right? correct. Finza, do you agree? I'm not sure, sir. अच्छा, let's say तुम एक ऑफिस में बैठे हुए हो और कोका कोला से कोई आता है, कोई एजीएम जीएम वटेवर, और वो आकर तुमसे कहता है कि यार हमारे यहाँ ना हम लोग 10 ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, 9 उसमें से बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बट देयर इज वन विच वी हैव बीन फेलिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम and we truly want to understand that what's wrong. Okay, and they hand over the case to you. This is your case, you tell us that what is going wrong, how to rectify it and get it resurrected. Okay, would you enjoy doing this kind of a work? Yes, sir. Are you confident on that? Not 100%. Sorry, you're not audible. Not 100%. Till what percent do you think you'll enjoy, like if the score is 100? 70. 70 to 80. ग्रेट. एक्चुअली होता क्या है स्पिंजा, कई बार ना कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक पता होने के बाद भी हम श्योर इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि अभी तक हमने वो चीज़ करके देखा नहीं है अपने लिए. जब अपन करके देखेंगे तो हमको श्योरिटी मिलेगा. इंडिकेशन तो अपन को मिल जाता है ट्रेड्स देख के, अपनी हैबिट्स देख करके, अपने को किस तरह का सब्जेक्ट्स पसंद आ रहा है वो देख करके, लेकिन जब तक हाथ से करे नहीं तब तक समझ नहीं आता. ओके, so the way you said the kind of things that you like in economics, probably the inflation part, probably studying about GDP, probably studying about banks, probably studying about stocks, shares, probably studying about capital market. So that means that there is a tendency to look at practical oriented study. That is number one, that how the world actually operates, what are things which are operational, okay, not purely theoretical. Second, you have that analytical brain according to your parents, where you can analyze the reasons, okay, that why is it something that is going wrong, or why is it doing well, or why is certain things happening. Like for example, if I am an investor and I am sitting with you and discussing my portfolio, so you can analyze that इस आदमी ने यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट किया है, यहाँ क्यों नहीं किया है, और अगर यहाँ किया है तो ये कितना कमा रहा होगा, अगर ये चेंज करेगा तो क्या हो सकता है. So probably that will be very interesting for you. Probably if I give you, let's say 5 lakh rupees and I tell you that, you invest it for me. Okay. So probably you would love to understand that, how to invest, where to invest, what are the trends of investments. You will study all of that first systematically because someone else's money is with you. Obviously you'll have to take that, onus. And then you start planning कि यार इसको ऐसे invest करेंगे. They'll give me a plan कि हाँ ये 5 चीजों पे हम invest करेंगे, इतना इतना पैसा invest करेंगे, ऐसे phases में हम invest करेंगे, इतना return expected है. Okay. अगर सच में मैं तुमको ऐसा काम दे दूं, would you like to do that? Yes, sir. ठीक. So one more thing apart from this, I have a lot of interest in psychology, but I couldn't take psychology in 11th because we had maths and psychology in the same group. So if either or था. yeah, so if I'm given a career with economics and psychology, then I would totally go for it. Okay, that's very difficult to have economics and psychology as a major minor.
Very few places on this universe where you would find that kind of a combination. But what can happen is that you can get into applied areas of psychology. Intriguing factor of looking into somebody's character, looking into somebody's nature, looking into how the brain is working, looking into the thought process of something is very intriguing. But think of it as a profession. ठीक है, दोनों को ही ले लेते हैं. पहले वाला एक काम तुमको मैंने दिया था, ठीक है, कोका कोला वाला. अब let's say you are working as a psychologist, so your basic life would be that people will come to you when they have problems in their life. भाई कोई खुश होकर तो आपके पास नहीं आएगा, ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं होता है. साइकोलॉजिस्ट के पास हम तभी जाते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम्स होता है. So people coming and sharing their mental traumas throughout the day with you and throughout the month or throughout the year or throughout your career. Okay. And you trying to solve them every day, giving them therapies, talking to them, counseling them, making them understand about the unreal things that they're thinking about, asking them not to procrastinate, these kind of stuff. So now let's compare between the two. The first job, the portfolio job, the Coca-Cola job or the psychological job. क्या लगता है क्या ज्यादा अपील करेगा तुमको? एज अ पर्सन तुम ज्यादा एंजॉय किसको करोगे? I'm not sure, sir. Let's say doing jobs with numbers, doing jobs with asymmetrical calculations, believing things which are very, very realistic, as understanding them and giving true solutions. You're giving solutions to a bank, you're giving solutions to a investor, you're giving solution to a customer, you're giving solution to a company. That is one kind of a job. And then on the other hand, as a psychologist, you're treating mental disorders. You're treating somebody who cannot sleep through the night, but treating somebody who has a tendency of fighting with people, treating somebody who has a tendency of murdering people, treating somebody who has a tendency of चोरी करने का tendency है उसको. Okay, so looking at that, the former is obviously more appealing to me, but then like in psychology we just don't have psychologists as an option, right? right, there are a lot of applied areas also. Like for example, there is something which is human resource, which is a typical area of applied psychology. So what you can do there is probably you can assess people and figure out that whether or not they are fit for your organization. Also, you will assess them in order to understand that if they have to become fit for your organization, what kind of trainings are required. Okay. Then you also prepare those training programs and make sure that the guys learn what you are trying to make them learn. Then you also have to assess from time to time whether or not the guy whom you brought inside the company is happy with the company. वो छोड़ने का plan तो नहीं कर रहा है, ठीक है? So that is also a very, very strong area of applied sciences which applies to the human resource world. Then there is another which is consumer psychology. Consumer psychology is the process through which a consumer decides on buying a certain product or service. For example, I want to buy a new laptop. So what is my process? क्या होता है process? क्या होता है कोई laptop खरीदता है तो? We search up the options on the internet. On the internet, that is step 1. Step 2. And we decide on the laptop we want to buy, and then we go to the market and buy it. Probably इतना आसान नहीं होता. Probably कुछ इस तरीके से होता है. जो एवरेज इंडियन होता है वो ऐसे करता है कि पहले इंटरनेट पे देखेगा, फीचर्स पढ़ेगा, उसके बाद अपने किसी कॉन्फिडेंट फ्रेंड या रिलेटिव के साथ बात करेगा जो टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ जानता है, उससे फीडबैक लेगा. यानी कि ह्यूमन फीडबैक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर वो अपने घर वालों से बात करेगा कि यार इतने पैसे खर्च करके मैं एक लैपटॉप लेने वाला हूं, ले लूं? ठीक है. फिर सबकी सहमति होगी. फिर वो मार्केट में जाएगा कि यार मार्केट में जाकर देख कर आता हूं, ऑनलाइन वाले तो कुछ भी करते हैं. मार्केट में जाएगा, दुकानों पे जाएगा, जाकर के चीज को टच करके आएगा.
फिर वो बैठेगा सोचने के लिए कि आप कौन सा लो, देखने में कौन सा अच्छा लगा, प्राइस में कौन सा अच्छा लगा, किस में ज्यादा डिस्काउंट मिला, किस में मेरे को क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, मेरे रिलेटिव ने मेरे को क्या बोला, सारे फैक्टर्स को देखेगा और फिर जाके वो डिसाइड करेगा. सो देयर आर सेवरल स्टेजेस थ्रू विच द कंज्यूमर गोज थ्रू इन ऑर्डर टू डिसाइड. नाउ इफ एज अ साइकोलॉजिस्ट, if you can figure out that what is the trend of the buying process for the for the consumer, then the company will benefit. How? कंपनी को पता होगा कि आदमी इनडिसाइसिव कब होने वाला है, ये आदमी सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए कब घूम रहा है, कौन सा स्टेज पे है. तो जिस स्टेज पे है उस तरह का इंफॉर्मेशन उसको दिया जाएगा. ठीक है. सो प्रोबब्ली जब वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए घूम रहा है तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट दे सकते हैं, स्पेक्स दे सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, व्हाटएवर. जब वो सेकंड स्टेज पे आता है कि अब वो ऑफर्स ढूंढ रहा है, यानी पैसे के बारे में सोच रहा है, तो हम उसको डिस्काउंट डील्स, क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, कैशबैक ऑप्शंस, फ्लिपकार्ट पेइंग ऑप्शंस ये दे सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे हर स्टेज पे हम उसके डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं इफ वी नो दैट यू नो व्हाट स्टेज द कंज्यूमर इज इन. सो दैट्स कॉल्ड द कंज्यूमर साइकोलॉजी पोर्शन. सो in case you study, let's say, economics, okay, in your undergrad, and in your postgrad you decide to study psychology, okay, that's also a possibility. Okay. Also, it might happen that today what seems to be like psychology studies, you can also get into general managerial studies, and you can study about consumer research, you can study about consumer decision process, consumer behavior, which are all applied areas of psychology. And later on you can specialize in that particular area, which is called the marketing domain. Okay, where you are analyzing numbers, you are analyzing facts, you are looking at your target audience, you know how they think, what kind of decision they make, what kind of money that they can spend, what kind of lifestyle they have, what kind of stuff they normally own, and what kind of stuff they aspire for. So you know that what to sell, when to sell, and where to sell. So that's pure marketing. Okay, where you are actually playing with somebody's mind. You know कि अगर मेरे को चॉकलेट इंडिया में फेमस करना है तो उसका प्रोसेस क्या है. कैडबरीज को देखा आपने? Look at 1970 Dairy Milk ad and look at Dairy Milk ad today. उनका प्लॉय पता है हमेशा क्या होता है? They attach with your sentiment. From time to time, if you look at the changes in their ads, they actually attach to your sentiments. कुछ मीठा हो जाए. Amazing. I mean, every Indian loved that idea, you know, खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए. Approximately most other people, Generation Z को छोड़ देते हैं, ठीक है? Generation Z does not like मीठा at all. You are like conscious people. We are not. So हमें तो यही पसंद आता है, ठीक है? फिर त्योहार है, आप देखना बिल्कुल कोई भी सेलिब्रेशन एरियाज आ रहे होंगे ईयर में, डेयरी मिल्क के एड शुरू हो जाएगा. ठीक है. So that is the idea that they are sending. They are attaching to your sentiments. So every product that you look at, they have a way of connecting with their consumer. So if you can become somebody who knows that how to attach with particular type of consumer for a particular type of a product, then boss, you are the king. You know it all. You know how to run businesses then. Ultimately, you are the guy who's going to run the show. Because तुम्हें पता है यार कौन हमारा कस्टमर है और कौन नहीं है, कौन खरीदेगा. Let's say for example you deal in a leisure item. For example, let's say एक travel and tourism कंपनी है, उसका एक प्रॉपर्टी है मलेशिया में. तुम्हें वो प्रॉपर्टी चलानी है, तुम्हें ये देखना है कि वो वहां लोग पहुंचे, जाकर खुश हो, मजा आए, फीडबैक बहुत जबरदस्त हो और वहां बहुत अच्छा रेवेन्यू भी आए. So then you will start looking at a certain type of people who travel international. Then you also start looking at what kind of destinations do they go. Do they like to party more, or do they like to have destinations which are more quieter in nature? Do they like to be in the lap of nature, or do they like to go for a lot of adventurous activities?
and then you communicate with that particular type of consumer in a particular way. So there is a lot of psychology involved. There is a lot of economics involved. There is a lot of business involved in this kind of a job. Now, the question might be that what is this job called? There are numerous names for this job. The job can be called as brand manager. The job can be marketing head. The job can be a marketing manager. The job can be public relations. Lot of other names, but more or less, it is a subset of marketing. Okay, but it will involve numbers. It will involve analyzing. It will involve a lot of your reasoning powers, and it will involve the psychological part also. So, Finza, had I been at your place as a commerce student, what would I have done if I have genuine interest about a subject which is not a part of my curriculum? I would have not let it go. I would have pursued that interest along with my main CBSE studies. I'll just keep doing online courses. I'll keep attending a lot of webinars, seminars, and a lot of internships where I can learn more and more about psychology. But on the mainstream, I'll keep my economics alive. So thereby, I'm trying to look at something very smartly. I'm trying to open up two very different options in my life. And where and when I find an amalgamation of the both, great. Okay. So there can be a couple of amalgamation areas, like probably you can find the applied sense of economics and applied sense of psychology, both in areas of management, where you can apply both of the things, but vaguely, मतलब थोड़ा minorly use होगा. If you study economics first and then get into psychology, directly दोनों चीजें use हो सकती है. Later on, you can work with major corporates in the psychology area, or probably you can work in the marketing area, you can work in the research area, you can work in the analytical area, or you can work in the consulting area also. Okay. And that company might be of anything. I mean, it can be a financial company, it can be a consumer durable company, it can be a media company, anything for that matter. Media mein to bahut zyada we use psychology. Okay. If you look at news channels today, you exactly know how they are using psychology, right? Look at each and every kind of a media, news channel. If you look at CNN, if you look at BBC, and if you look at NDTV, you understand the difference, right? They know their genres, what kind of people are listening to them. They're providing the same information, but in a very different manner. So from CNN, you will look at it from a very economics kind of a perspective. BBC, it will look from a very global summit kind of a perspective. NDTV would be more layman's perspective. Okay, so that is how it differs, right? So this love for understanding things, this love for understanding people's brain, people's natural abilities, or their problems in life, or their capabilities, okay, is a very lovely thing to nurture, along with economics, which might be your first choice of things. Okay, so that is how things are. So as of now, what I think, that you are not in a very complex situation. If I throw a very good economics course at you with a combination of a management course, okay, then that can be a brilliant option for you. Probably what you can do is you can study economics, and then in the management portion, you can concentrate on the human resource part, or you can concentrate on the marketing part. Both areas, they are using applied psychology. Okay, let's not look at finance, because if I have a true understanding of economics, then I understand any kind of business in this world, any kind of a political, non-political, agricultural, social, labor, or business. I can understand that in and out. So it's a basic understanding of the world, and the true working capacity comes from the other region. Okay, so that is one kind of. So Oxford offers one of these courses. It's a combination course of economics and management. Okay, it's a dual major program. So that is one program that you can look at. There are a lot of combination programs in Monash University, which is in Australia. It is ranked 57th in the world. You can look at Monash also.
if you can find some solutions. Then probably what you can do is you can study liberal arts also. Probably that will be the best solution for you, to study liberal arts programs. But probably in India, the liberal art programs that we have, उनका ना क्या होता है कि आपको पहले ही सिलेक्ट करना होता है कि मेरे को फिनेंस वाला लाइन लेना है, इकोनॉमिक्स वाला लेना है या साइकोलॉजी वाला लेना है. लेकिन when you look at London School of Economics, when you look at King's College London, things are very open and wide. So I can study physics and music, I can study economics and psychology, I can study management and political science, I can go left and right together, right? So I believe that way is far better. So if you look at American universities also, many American children, when they are not very sure about what they exactly want to do, they take up majorly liberal arts, or they have a different name for that. Interdisciplinary studies is what they call it. So they take various disciplines under one umbrella. They go through it for a couple of years, and then they understand that, what is the call for me? Where is it that I find more relevance? Where is it there is more opportunity for myself? So I go forward to that. So it's a beautiful way of realizing your capabilities, right? So I propose that we look at these kind of programs, open kind of programs more, so that we have time and we have the opportunity to realize the love for both the subjects. We learn both of them, and then we finally are in a situation to decide, looking at the market, that where should I move forward. Okay, so that kind of a probability exists for me. What do you say? Yes, so seems okay to me. तो मुझे रिएक्शन से लगा अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है. In my view, sir, whatever you have said, I think that has opened my mind. The kind of observations, the kind of reasoning that you have told to Fenza, it was just new to me. It was just open. It has opened my mind that the options which are available with the economics and psychology are many options. Psychology doesn't revolve around the patients, like the kind of the mental patients. So I think this is her view. I'm sure that she would like to go with the economics and the management part, where every company is involved. They want to sell their product, or they want to whatever they want to do with the kind of items they have. सर एक सेकंड लूंगा मैं. हाँ जी. इंजा, एक चीज बताओ, तुम अपनी साइकोलॉजी को कहाँ यूज करना चाहते हो? लोगों का प्रॉब्लम्स दूर करना चाहते हो इंडिविजुअली, या यू वुड लाइक टू यूज इट फॉर कॉर्पोरेट्स? So the consumer psychologist part, that was very fascinating to me. I mean, ठीक है, perfect. If you like economics and if you are saying that consumer psychology is fascinating, then believe on me, trust on me. Probably me and you, we fall in the same way of thinking. Okay, I fell for it almost 25 years back in my life. You are falling for it today. सुनो मेरी बात ध्यान से. शुरुआत में इको को पकड़ो, उसका बेस मजबूत करो. 3 साल से 4 साल इको को तह तक समझ लो, और सिर्फ पढ़ाई के लिए पढ़ाई मत करो, उससे मोहब्बत करो. Fall in love with economics. Go and attend research programs, do internships, apply to Niti Aayog, go and work with the planning commission, do all of these sort of things, and then realize that how much have you enjoyed doing it. Then probably in your masters, you need not again do economics, although you have an option, a life for that. Okay, if your options change at that point of time, if your viewpoints change, which is a natural thing to happen with a lot of people, they tend to change. So you might as well take up masters in economics and then get into a PhD area also. So research arena khul jayega pura. Or probably if you want to, right after economics, if you want to work. So let's say you have studied economics from NTU, Nanyang Technological University, or probably you have studied from New York University, or probably you have studied at SRCC.
ठीक है, and then you are getting to work with the government for policy making. ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है ना, लेट से बोलती है कि हर किसी का बैंक में अकाउंट होना चाहिए, या पब्लिक पॉलिसी आई है कि अगर आपका पीपीएफ अकाउंट है तो गवर्नमेंट उसमें इतने पैसे डालेगी अगर आपकी उम्र 60 ईयर्स से ऊपर है. सो यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू रेकमेंड दैट पॉलिसी टू द गवर्नमेंट, क्या ऐसा होना चाहिए. सो कई बार जो हम लोग घर पे डिस्कशन करते हैं ना कि गवर्नमेंट ऐसे क्यों नहीं करती है, इस चीज को तो ऐसे करना चाहिए, you will be able to bring that into action. Okay, so that's policy making. Then there is agricultural sector, labor sector, banking sector, financial sector, micro and macro sector. So ये सारे sectors हैं, उनमें से किसी में भी आप जाकर के जॉब कर सकते हो. You can work with consulting organizations where you provide solutions to major corporates. उनका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, बेटरमेंट हो सकती है, हायरिंग को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंस को लेके हो सकता है. यू विल बी एबल टू गिव देम सॉल्यूशंस बिकॉज यू कम फ्रॉम अ इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड. सो यू कैन वर्क, you can do a master's in economics, you can definitely look at an MBA program, or you can look at a typical finance program. All of that study facility is in front of you at your master's level. So all of those choices will remain open and you can choose whatever you want to. But typically, if you want to get into consumer psychology, then you should study managerial programs in your master's. Okay. If you get a combination program in your undergrad, great. If you don't, if you get a typical economics program, even better. Study economics first and then get into managerial studies. You will enjoy managerial studies more because you will see the true application of economics. Okay. In all the areas. I hope Finza, you were not lost. No, sir, I'm completely. Acha, ठीक है. So, like, if I don't do psychology, I don't have psychology in school, हाँ. then I won't take psychology in my undergrad as well. Then will I be able to do psychology in master's? आप जब जिंदगी में चाहो साइकोलॉजी तब शुरू हो सकती है. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता. ठीक है. So right now she doesn't need to do online courses for psychology. नहीं, वो तो करना Yes, that is something that persistently we should be always doing. Okay. We should be taking up a lot of courses. This is an interest area. Right. मतलब चलो अगर साइकोलॉजी की जगह ये ऑप्शन म्यूजिक होता तो क्या हम उसे छोड़ देते? नहीं छोड़ते ना. अपन कुछ ना कुछ म्यूजिक स्कूल ज्वाइन करते, कोई ना कोई चीज सीखते रहते, उसको हम प्रैक्टिस में लाते. So similarly, you can take up a lot of online courses which are available from around the world and you can keep doing that. And not only online courses, physical studies of books related to psychology, physical studies of journals, and also regular interaction with psychologists per se. Participating in a lot of forums, webinars, or communities of psychologists. That will also help. There are n number of people, Finza, who love mathematics and psychology, computer science and psychology, economics and psychology. Those combinations are happening like numerous number of times for us today. It didn't happen 10 years back. जो मेरे students आते थे बहुत सीधे होते थे, उनको एक direction दिखता था. अब इतना varied आता है ना कि उनको combination programs ही अच्छा लगता है. Okay, so priority 1, we should keep economics. Priority 2, liberal arts programs. Okay, these should be priority 1 and 2 at your undergrad level. और अभी undergrad का सोचते हैं क्योंकि आने वाले कल में आपका brain कैसे change होगा. As a psychology lover, you understand that better than me. Okay, if you truly love psychology, then you know that how human brain progresses with age, maturity, timelines, right? So let us give ourselves that time. Okay, let us experience things and then probably see that, you know, where have we reached? Are we still consistently in love with psychology? Do we really want to pursue it? If you want to do it, you can do it. अच्छा, तुम्हारा जो confusion था उसका एक बहुत अच्छा example देता हूँ. One of my students from MIT, she is right now studying masters in psychology at King's College London. MIT में पता है क्या पढ़ रही थी वो? Science, Guess करो. PCM, Sorry?
PCM with computer. नहीं नहीं, एमिटी यूनिवर्सिटी में थी वो, कॉलेज. गेस करो क्या पढ़ रही होगी? Something to फिजिक्स. Physics. BSc physics. So I met her in her pre-final year. She was in the second year. So this girl comes to our office and she says कि sir, physics बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे को इसको लेकर आगे नहीं बढ़ना है. यहाँ तक पढ़ लिया बहुत है. अब मुझे आप जैसा काम करना है, जो आप करते हो, मुझे यही करना है. तो कैसे पॉसिबल होगा? तो मैंने बोला साइकोलॉजी पढ़ना होगा. और सर अब मैं तो फिजिक्स ले लिया, पापा मैंने फिजिक्स दिलाया था, मैंने वही ले लिया. जॉइंट एंट्रेंस दिया था, इंजीनियरिंग में अच्छी जगह नहीं हुआ, आईआईटी में, एमआईटी में डाल दिया, फिजिक्स ले लिया, मैंने पढ़ लिया फिजिक्स. लेकिन अब मुझे वहां नहीं पढ़ना, अब मैं क्या करूं? अब वो 50 जगह ये पूछ कर आई थी कि मैं फिजिक्स से साइकोलॉजी में कैसे जाऊं. सबने मना कर दिया उसको कि भाई हो ही नहीं सकता, तुम्हारा तो बैकग्राउंड ही नहीं है, तुम कैसे करोगी. But what people fail to realize is that at an age of 17 or 18, you are not that matured to take a decision for your entire lifetime. Mistakes might happen. I might take a different route and then I might realize myself. Okay, so if that realization has happened, there should be enough gateways open for the student. So there were no gateway as such open for her in India. So then we realized that United Kingdom probably is one of the place where she can go ahead and study psychology. So we applied to UCL, we applied to King's College London and a few other places. We got through King's College London. UCL भी हो सकता था, but उस लड़की का थोड़ा जो SOP था उस पे हमने जो इनपुट्स दिए उसने माना नहीं. उसने अपने इनपुट्स लगाए तो रिजेक्शन आया. ठीक है. But King's College, she followed our instructions and she got through. And she got a decent scholarship also. So that's how it is. तो ऐसा नहीं है कि तुम इकोनॉमिक्स से साइकोलॉजी में नहीं जा सकती. Okay. Okay. So that is how things are. Right. Okay. Any other questions that you have in your mind? So for undergrad, what would you suggest? Indian University or abroad? Both. We are sitting in a pandemic situation. This is an atom bomb situation, believe me. And I don't see this going away in the next 1 year. Although there might be a lot of lullabies, going around that बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. मुझे लगता नहीं है. ये अभी टाइम लगेगा. और देखो, as parents, as counselors, if you have to think of us, okay, you're 17, 18, I'm 40. ठीक है. I would not like to put you in a very risky proposition. I would like to have the best of opportunities for my daughter. I would like to see that my daughter gets at least 5 or 6 universities on the table, and then she is in a position of taking a call कि मेरे को कहाँ जाना है, rather than I running around several universities asking for admission and getting rejected. I don't want that. I want to be the king. Okay. So with that in mind, I should apply to India. I should apply abroad. यार कल का सिचुएशन हमको पता नहीं है. World War 3 हो गया तो क्या करोगी? फिर तो कहीं नहीं जा रहे अपन, इंडिया बैठेंगे ना फिर. ठीक है ना. तो उसी तरीके से अपन को सोचना है कि हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए. ठीक है. तो अपन दोनों जगह अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो इंडिया में कई जगहों पर ना आपको कुछ नहीं करना है. सिर्फ आपको एक बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है. जो चीज हम बाहर की यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं वही डॉक्यूमेंट्स यहां भी जाना है, वही मार्क्स यहां जाना है, वही प्रोफाइल यहां जाना है. So if you look at India, there are 2 ways of admission. One is merit based, second is entrance based. Okay. So let's look at those which are merit based, and also the one universities which take admission just like the Western universities. So that ways we are chucking out probably the entrance ones. Okay. ठीक है, एंट्रेंस वाला छोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत उतना सारा नहीं हो पाएगा. सीबीएसई पे ध्यान देते हैं, अपने प्रोफाइल पे ध्यान देते हैं. अब्रॉड यूनिवर्सिटीज और इंडियन यूनिवर्सिटीज कुछ हम लोग ले लेते हैं जो टॉप नॉच है.
So if I stay back in India for economics, what kind of universities would I stay back for? You have a pen and paper? Acha. Although I'm recording this and I'll send you the recording also. So don't worry. So which part of Gurgaon do you stay in? Palam Vihar, sir. Sorry, ma'am, come again. Palam Vihar. Palam Vihar. Ah, Palam Vihar. Sure. And she has ICSE board, not CBSE. Oh, you're in ICSC. Okay. Yeah. I mean, Scottish. they have all the formats. Yeah. So that's very confusing. Yeah. Yeah. So ICSC है तुम्हारा, तब तो बहुत बढ़िया है. मेरा भी स्कूल ICSC था 10th तक. उसके बाद स्टेट बोर्ड. हॉरिबल जर्नी था. ठीक है, हॉरिबल जर्नी था. ICSC से जब स्टेट बोर्ड आया ना. Anyways, so what kind of universities would I stay back for India for economics? Number one, my choice would be Delhi University, undoubtedly. But not all the colleges of Delhi University. Which all colleges? Probably I look at Stephens. I will look at SRCC. I look at LSR. ये तीन मिलेगा तो मैं DU में रुक रहा हूं. ठीक है? Okay. Next is a university which is in the southern part of the country. Okay, that's called Azim Premji University. It's in Bangalore. And it's very famous for its developmental studies and economics programs. Although in northern India, we don't discuss much of southern India. So that's why, people are not much aware. But it's a very good university to go to. Okay, for eco. Then you have another college for girls in Bangalore particularly. That's called Mount Carmel. Mount Carmel, that's in Bangalore. Also, somehow I have liked these modern universities, which are the likes of Ashoka, Flame, both of them. I've liked both of them. Okay. So in case you are getting, DU, we will stay back. If you're getting the rest, probably we'll compare with what we are getting outside India. Okay. But we are keeping the rest of the three as backups in India. तो मार्क कर लो इसको. मैंने बोल दिया ये तीनों बैकअप्स है. DU हमारी मेन प्रायोरिटी है इंडिया में इफ इट्स इकोनॉमिक्स. ठीक है. Now if I look at outside India, okay, for an economics major, अच्छा उससे जाने से पहले मुझे ये भी पता करना था. 10th में what kind of marks did you have? सर कैंसिल हो गए थे. अच्छा वो तो कैंसिल हो गए. चलो कोई बात नहीं. प्री बोर्ड्स में कितने थे? सर प्री बोर्ड 1 I got 96 and प्री बोर्ड 2 ड्रॉप हुआ था 93. यार बोर्ड्स हो जाने चाहिए थे. नहीं? Feel bad for you people. और कम से कम इस हफ्ते मेरे पास ऐसे 10 स्टूडेंट आए होंगे जो सच में अगर बोर्ड्स होते तो ये लोग 98, 99, 97 ऐसा ही स्कोर करते. सो क्या करें यार. Nothing we can't help In it. 9, she scored 95%. Ninth also the ICSE, the board was, there was a board paper, Our final exams were from the boards. So what they are suggesting, like they are doing the 9th and 10th, both average marks. Absolutely. Yeah. The council has given decided. this information. In fact, let me tell you that class 12th boards is also getting cancelled this year. Oh, Acha. so how will they manage? They will also do the Internal marks, ma'am. Internal marks calculations has started in almost every school in this country now. Okay. CBSE has started sending instructions. In fact, they have sent it to all schools at one go. Okay. And all the teachers that I know across the country have started calculations. Okay. So it's a very sorry state of affairs. I don't know how my students would get visa this year. Very, very difficult scenario. So, Finza, अगर तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे हैं तो हम सबसे पहले उस कंट्री को टारगेट करेंगे जो मार्क्स लवर है.
जिसको मार्क्स बहुत पसंद है, एंड दैट इज सिंगापुर. अच्छा. NTU, नैन्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी. बेटे अगर तुम मेरी बात समझो, 11th और 12th जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी अभी तक रही है, अगर तुम वो मैनेज करोगे ना, यू विल गेट थ्रू NTU. And it is 13th ranked university in the world. Okay, it is big, very big. And a lot of people will tell you that Singapore will not provide internships, they will not provide jobs. Absolute myth. Go to the NTU website, you will see that there are internship opportunities available. Okay, and the recognition of NTU and another university in Singapore, which is National University of Singapore, NUS. The recognition of both of these universities is worldwide. One is ranked 8th, the other is ranked 13th, overall ranking of the university. Okay, so we can look at both of them. Acha, see, ICSE though you have simple one mathematics, so no problems. Okay. CBSE they have standard and applied and all those kind of hodgepodge things. You have one single mathematics, right? Right. So And sorry? one question. Go ahead. And in NUS, they take only marks, no profile, extra. Yes, they do, but topmost priority is given to your consistent academic performance. Okay. If you want to look at scholarships, then they would look at your leadership activities. They would look at your community services and extracurricular balance. What all would So- come in extracurricular? Ma'am, normally that is something that we plan with the candidate when we have assessed the personality. All right. ठीक है, देखिए ये समझिए कि हो सकता है आप और फिंजा दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, दोनों को इकोनॉमिक्स करना है, लेकिन आप ये तो मानोगे ना कि आप दोनों बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज हो एज ह्यूमन बीइंग्स. Exactly. सो जिस तरीके से मैं आपसे काम कराऊंगा उस तरीके से मैं फिंजा से काम नहीं करा सकता. Exactly. It will not apply to her. So I need to understand her personality overall through a psychological test. I'll get to understand that. Okay. Okay. So that we will conduct once we start the program. All So right. my psychologist will sit with her, analyze the report and understand that what kind of a person she is. And thereby we will provide certain tasks that applies to her, Okay. that appeals to her and applies to her both. Okay. Okay. That's how it is. Does these universities, NTU and NUS, they SAT का भी देखते हैं वो लोग? मैम यहाँ पे SAT मैंडेटरी नहीं है. Okay. Until and unless you are doing an engineering program, it is not required for you to apply for SAT. Okay. Okay. So what do you suggest for Finza? Like she should give a SAT right now this year or not? मैम एक एक करके आते हैं, मैं सारी बातें आपके आंसर करूंगा. ठीक है, मुझे पता है जनरल क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं. Exactly. Okay, so if you're looking at economics and you're looking at outside the country, I have given you the top two options which are close by. So for parents, it's a very matter of satisfaction at Singapore. Why? Because it's a very safe place, just a 4-hour destination, and Right. culturally they are very strong. Okay, Yes. Yeah. so that way one feels very safe. Okay. Yeah. फिंजा हमेशा याद रखो, Indian parents are the best parents. Even if you go at the age of 40, they will still treat you as their 5-year-old. ठीक है? So they always like to keep their children as close to them as possible. ठीक है? Yes, sir. We also had Singapore in mind only because of the distance and because of how safe it is. Yeah, absolutely. But we'll also look at top-notch universities across the world where the opportunities for working or generating experience is also available. Okay? So studying at Singapore will mean that worldwide opportunities will open to me. Let's say हम सिंगापुर के अलावा भी तो 3-4 और जगह अप्लाई करेंगे. Correct. तो नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास 2 है. Either we apply to US or we apply to Canada. Okay. Now, US, there are a lot of universities which will consider economics as a STEM program. Now, does the family understand what is STEM? Yeah, got it. Acha, Finza doesn't. STEM is basically science, technology, engineering, maths. इससे जो related programs होते हैं उनको हम STEM program बोलते हैं.
तो इकोनॉमिक्स में तो मैथ्स बहुत सारा इन्वॉल्व होता है, तो कई जगहों पे यूनाइटेड स्टेट्स में इकोनॉमिक्स मेजर्स को स्टेम प्रोग्राम बोलते हैं। अब सवाल ये होता है कि स्टेम से फायदा क्या होगा? अगर अपन स्टेम प्रोग्राम करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स विल गिव अस a 3-year of optional practical training visa. That means they will allow us to look for jobs for 3 years after completing the program. Correct. Okay. So if we apply to United States, only those programs which are STEM programs, we will apply to that only. Okay. Now, while telling you about United States, let me also make the parents aware about what is the kind of cost that is involved. So Finza, you can note down that Singapore will cost you around about 25 to 26 lakhs per annum for tuition fee and 12 lakhs as living cost. US, the kind of universities that I will look for you, will be in the top 100 of the world. So their tuition fee will range between 45 lakhs to 60 lakhs per annum. And the living cost is 12 lakhs per annum. Okay. My third country is Canada. Now, why is it my third country, or why am I preferring Canada? Because the kind of proposition that they provide, the kind of stay back facilities that they have. So you might stay back for your entire lifetime. You might stay back for 5 years, 6 years, 10 years, 3 years, 4 years, whatever is the number in your mind. Whenever you have a callback in your heart to go back home, you can probably just do that. But my advice is 2 साल का experience, 2 years of work experience wherever you go in this world. And then probably if you want to come back to India, I'm fine. Don't come back without experience. So Canada, if I look at universities, then the topmost university will be University of British Columbia, UBC. University of Toronto, or we call it U of T. And then we have University of Waterloo, which is U of W. Then we have McGill University. So these are the top 4 Canadian universities. They do not require SATs. They require strong profile where you have research, you have community service. Both of the things might be strongly, prevalently present. In case we apply to United States, we will only go when we get very decent scholarships. Okay? Or financial aid, whatever they offer to us. So if you want to get into top universities in United States, ठीक है, पता है फिंजा, इसमें ना एक फॉर्मूला है, ये चीज समझो, प्रिपेयर करो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और बाकी सब कुछ छोड़ दो, अपने आप बाकी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, वो केक वॉक की तरह हो जाएगा. सो अपन को यूनाइटेड स्टेट्स दिमाग में रख के चलना है. सो फॉर एग्जांपल वी वांट टू अप्लाई टू द यूसीज, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, or probably we want to apply to UT Arlington. UT what? University of Texas Arlington. अच्छा, Texas, ठीक है. Or say we want to apply to University of Illinois Urbana-Champaign. These are great destinations for studying economics per se. Okay, Michigan University, University of Michigan, sorry, that also is a pretty good university. Okay, so ऐसी यूनिवर्सिटीज हमको अप्लाई करनी है. यूनाइटेड स्टेट्स इज द ओनली प्लेस वेयर SAT is required, so that the family will have to decide that whether or not you are looking forward to this kind of a financial drain. Okay, so if you say a yes, then I draw the timelines कि हमको कब SAT लिखना है, कब क्या करना है.
एंड इफ यू से कि नहीं रितेश जी इसको रहने देते हैं, बाकी दोनों को अप्लाई करते हैं या कोई और कंट्री में भी अप्लाई करते हैं, आई एम फाइन विद दैट, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद दैट. ओके, सो इसमें सर इंटरप्ट मैं कर रहा हूँ, इसमें सर कॉस्ट फैक्टर बहुत मेन आएगा. जी, That's what he's saying. क्योंकि नहीं, दिस इज व्हाट आई द कंसर्न इज कि आपने जो यूनिवर्सिटीज बताई हैं ठीक है, दैट आर दोज आर टॉप नॉच एंड वेरी इंफॉर्मेटिव, लेकिन सर इसमें एक कॉस्ट फैक्टर आएगा हमारा. तो कॉस्ट फैक्टर मैं आपको नहीं तो बता देता हूँ कि व्हाट आई एम लाइक ओके कंफर्टेबल विद इट. मेरा जो है मानना कि अगर कोई कोर्स 4 इयर्स या 3 इयर्स होता है तो आई कैन गो, डेफिनेटली आई कैन अप्लाई फॉर द स्टूडेंट लोन, दैट इज नो प्रॉब्लम. बट टू गो फॉर easy things, so it should be 50K for the whole year. For the whole course. अच्छा, For the whole course. for the You whole can say- course. You can say 14 to 15 lakhs per annum. Okay, okay, मतलब ये मेरा that is the case. that is the comfortable part, Okay, because if that is the case, let me give you a solution. हाँ जी हाँ जी. European countries, okay, like for example, सॉरी इंटरप्ट करो, ये सोल्यूशन में आप वो ही दीजिएगा जो सही भी हो और जी, बिल्कुल. बेटर फॉर, ये नहीं कि कॉस्ट देख के नहीं, कॉस्ट देख के नहीं कि हाँ, जस्ट फॉर हेक ऑफ भेजना है. वैल्यू फॉर मनी. हाँ, वैल्यू फॉर मनी. Okay, so there is this university in Prague अच्छा, that's called University of Economics. Fee structure is exactly the same that you said. तो मेरा ये फीस स्ट्रक्चर ऑब्वियसली कम तो है, लेकिन चलेगा. हाँ, ये तो नहीं कि अब्रॉड में फिर दिक्कत नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है. आपको लोन्स का थोड़ा देखना होगा सर. लोन्स में आप हेल्प कराएंगे? लोन्स में हम आपको सिर्फ डायरेक्शन दे पाएंगे सर. लोन्स आपके पर्सनल रिलेशन से ही होता है. अच्छा, वो वैसे मिल जाता है? मिल जाता है सर. अच्छा, मुझे ये पता नहीं है इसके बारे में. जी, मिल जाता है. सो आप क्या करो कि जहां पर भी आपका बैंक अकाउंट है, जहां पे सरकारी बैंक है, हाँ हाँ, जो वहां का बैंक मैनेजर है उससे थोड़ा बहुत बीच बीच में आप मिलते रहो. राइट. दैट इज वेरी नेसेसरी टू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद दीज पीपल. इनके पास ना कोटा होता है हर साल का. अच्छा, तो आप जब ऑफर लेटर ले जाकर डालोगे तो वो अप्रूव कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स से हम यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स अप्लाई करते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स का पर ईयर का फीस इज 9.5 lakhs एंड 10 lakhs के अराउंड वहां का लिविंग कॉस्ट है. ठीक है. फिर देयर इज अनदर यूनिवर्सिटी, अनदर प्लेस विच इज नीदरलैंड्स, where they speak fluent English, and they have a lot of universities like University of Amsterdam that is ranking in the world top 100. Then you have something called University of Groningen. Okay, Groningen. मेरा भी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, वो यूरोपियन प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट है. Where is it? In Netherlands? Netherlands. It's in Netherlands. Then you have something called University of Vrije. Okay, so these kind of places. Vrije, V-R-I-J-E. So these are some places that you can look at: Groningen, Wageningen, Vrije, University of Amsterdam. So this year I have approximately 8 to 10 students who are going to these universities. okay. Last year also I had approximately 12 students who went to these universities. They were all looking for value for money propositions. Good universities, good education system, English speaking system, value for money. Okay. इसमें भी सर वो जो होता है क्राइटेरिया होता है, लाइक इन द कनाडा यू कैन स्टे फॉर 3 years, 5 years, 10 years. मैं बता देता हूँ सर. यूरोप में होता है? इसमें 2 years stay back policy है. अच्छा, 2 साल का जॉब सर्च है. और दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन में आप कहीं पर भी जाकर काम कर सकते हैं. अच्छा. ठीक है, यूरोपियन यूनियन में आप कहीं पर भी जाकर काम कर सकते हैं. सो इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल. ओके, तो हमने जो बात करी थी सर अभी सिंगापुर को लेकर या जो और यूनिवर्सिटीज को लेकर जहाँ पे पर एनम थोड़ा ज्यादा जा रहा था आउट ऑफ द बजट, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे फिर? कंसीडर क्यों नहीं करेंगे? कंसीडर करेंगे.
हम हमेशा दो ऑप्शंस लेकर चलेंगे, एक ऑप्शन है विद स्कॉलरशिप और एक ऑप्शन है विदाउट स्कॉलरशिप। तो उसमें अगर स्कॉलरशिप कितनी मिल जाती है जी? सर कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, अच्छा, क्योंकि आप डिटरमाइन नहीं कर सकते उनके पास फंड्स इस साल कितने हैं, आपके बच्चे को कितना मिलेगा, यू कैन नॉट एवर डिटरमाइन। देयर इज नो फिक्स्ड फंड, फिक्स्ड फंड नहीं होता है, इट इज ऑलवेज नीड बेस्ड। सो लेट्स से माय फैमिली इनकम इज 30 lakhs and the university fee is 40 lakhs, but I am a very meritorious student, I have a very strong profile, and the university wants to have me on campus. So what they might do is they might reduce the fee by 10 lakhs. Okay, so that is called financial aid. Okay, ये financial aid सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिलता है। ओके, कनाडा में भी हमारे पास कुछ वैल्यू एड प्रोपोजिशंस हो सकते हैं, जैसे कि देयर इज अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड ब्रॉक यूनिवर्सिटी, BROCK। ओके, उसकी फीस someone was telling me about the Huron, I think maybe Huron or whatever. I know about that university, but it's not very great, I'll tell you. Right. Okay, it's not very great. It's a partner university, अच्छा, but it's not very great. So what you do is look at the top 4. अगर top 4 में हमको कुछ थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप मिल जाता है तो nothing like it, अगर अफोर्डेबल हो जाता है, क्योंकि कनाडा में क्या है ना, लिविंग कॉस्ट इज 6 lakhs. ओके, कनाडा का प्राइस, कनाडा का cost. हाँ मैं बता देता हूँ, अगर टॉप यूनिवर्सिटीज जाएंगे तो टॉप यूनिवर्सिटी विल कॉस्ट यू एनीथिंग बिटवीन 25 to 30 lakhs per annum with a living cost which is 6 lakhs, and the course duration is 4 years. But the best part is that Canadian universities allow you to work part-time. You can earn a lot of money there. Plus, they also have a co-op system wherein you can work for 8 hours in a day. After every semester, they give you 2 months to work full-time. So you can generate quite an amount of money. Basically, first year के बाद living cost पूरा तुम अपने आप earn कर सकते हो. Okay? ठीक है, तो दैट वेज यू कैन मैनेज सर, कि आधा मैंने लोन ले लिया, आधा ये बच्चा खुद अर्न कर ले, तो ऐसे करके अगर होता है तो देन, और प्लस देखो जब आप पार्ट टाइम कर रहे हो और साथ में आप इंटर्नशिप भी कर रहे हो, दोनों बराबर चल रहा है, तो आप डुअल अर्निंग कर रहे हो। ठीक है, सो दैट इज द प्रोपोजिशन। प्लस आप पार्ट टाइम थ्रू आउट द ईयर तो कर ही रहे हो। ठीक है, सो दैट वेज कनाडा को हम जाने नहीं दे सकते, वो अच्छा ऑप्शन है। नीदरलैंड्स को हम जाने नहीं दे सकते, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिंगापुर हमको स्कॉलरशिप देगा या यूएस हमको स्कॉलरशिप देगा तो देखेंगे। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट, दैट्स हाउ इट इज। फिंजा क्या हुआ, दुखी हो गई थोड़ा सा? नो सर, क्वेश्चन है। अच्छा, तुम नॉर्मली ऐसे सीरियस रहती हो क्या? करेक्ट, आपने एकदम बोला, एकदम सही बोला। यस्टरडे हंसती नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वैसे ये भी है कि हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम शुरुआत से इसके साथ ज्ञान वाली बातें कर रहे हैं, हम शुरुआत से इसके साथ एडमिशन होगा, सब्जेक्ट ये सब वो फलाना ढमकाना, तो हंसने का स्कोप तो था नहीं, तो अब उसको दोष देने से फायदा नहीं है। नहीं हंसती है ये खूब, बहुत लाउडली हंसती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड जी। यू हैड अ क्वेश्चन, यू टेल मी। Yes, sir. So for scholarship in Canadian universities, what all is required? They are automatic scholarships, majorly. So you don't have to apply separately for them, for most of the scholarships, except for one, which is the Lester B. Pearson scholarship offered by Toronto. So Lester B. Pearson किसी भी स्कूल के एक बच्चे को मिलता है। वेरी टफ। स्कूल उसको रेकमेंड करता है, फिर यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है कि उसको देना है कि नहीं देना है, लेकिन स्कूल एक ही बच्चे को रेकमेंड कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज लेस्टर बी पियर्सन। लेस्टर बी पियर्सन में पिछले साल आई हैड गॉट अ $1,80,000 कैनेडियन डॉलर स्कॉलरशिप। ओके, सो यू माइट ट्राई। Then there is UBC में there is something called the Karen McKellen scholarship. So Karen McKellen में it is need based, extra currics and academics, तीनों देखते हैं वो।
ठीक है, तुमको ना मैं अगले हफ्ते ना मेरा एक स्कॉलरशिप वाला वेबिनार होगा, मैं उसका इनवाइट भेजूंगा, ठीक है, आप लोग सब आना, उसमें ना हम बहुत सारा स्कॉलरशिप डिस्कस करने वाले हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, तो वो भी अच्छा ही रहेगा। उसके पहले भी हम लोग काम करेंगे, पर वो अटेंड करते रहना, बीच बीच में मेरे ऐसे ज्ञान वाले बहुत अच्छे वेबिनार्स हो रहे हैं आजकल। सो ऐसे कैरन मैककेलिन में कर सकते हैं। फिर एक होता है प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप एट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, सॉरी, $5,000 रिन्यूएबल स्कॉलरशिप है, यानी कि पहले साल मिला, अगले साल भी आपने अच्छा परफॉर्म किया तो रिन्यू हो गया स्कॉलरशिप, और 2.5 लाख रुपए, ठीक है, इट्स नॉट अ बैड अमाउंट, ओके, 2.5 लाख स्ट्रेट अवे, 50% ऑफ योर लिविंग कॉस्ट, राइट, सो दैट कैन बी अर्न्ड, so that is how scholarships work, okay, so that is, you know, at the very onset, that's why I said that let us look at India as well as abroad, okay, let's keep both the propositions open. Once the offers come, we'll see that, you know, whosoever has provided it with what kind of discount, what kind of scholarship, if it becomes viable for us, then we go ahead. Otherwise, you know, India is a nice place, yeah. So, but I think getting into DU would be very tough because of the cutoffs. Sir, ICSE won't give me a 99%. Darling, listen to one thing. Getting into these universities that we are discussing is also not a bed of roses. The kind of tasks that I will get you through, the kind of tasks that I'll ask you to do is going to be very, very taxing on you. Okay? So nothing comes easy. Whatever is top notch is deserve, you know, it deserves the kind of effort that is required. Only then you will enjoy that place. अगर एफर्ट करे बिना मिल जाएगा तो फिर तो क्या मजा ही नहीं आएगा, फिर तो लगेगा अपन कहां पर आ गए. I am ready to give 100% effort from my side. I am ready to give 100% effort from my side as well, if you are ready. All right, sir. But there's one doubt in my mind. As I am from the business background, I always see that a person should have a caliber, right? So by understanding her views, by understanding her mind, तो एक बच्चे का caliber होता है हर चीज में. तो मेरा ये मानना है कि हम ठीक है, we should approach the top notch universities. There is no reason not going those universities. लेकिन एक बंदे का कैलिबर के हिसाब से अगर हम अप्रोच करें तो एक क्लियर होते हैं ना भाई कि हमें यहीं जाना है. वी आर ओपन विद द इंडिया एंड द अब्रॉड, लेकिन अगर हम उसको फिल्ट्रेशन से कर दें कि ये हमारी यूनिवर्सिटीज हैं यार, ये हमें जाना है, तो जैसे होता है ना, जैसे मेरा ड्रीम अगर आईआईटी का है, अगर भैया मेरे में कैलिबर ही नहीं आईआईटी का तो मैं करके क्या करूंगा, मतलब मेरा अपना व्यू है, मैं ये नहीं डिस्करेज नहीं कर रहा. एक पूछना चाह रहा था कि हम इसमें कुछ फिल्ट्रेशन करेंगे. जी बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि हर बच्चे का एक कैलिबर होता है. बिल्कुल करेंगे. सो होता क्या है कि जैसे जैसे आपके मार्क्स आते जाते हैं, हाँ जी, जैसे जैसे आपके स्कोर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल हम यूएस प्लान कर रहे हैं तो हमारा एसएटी स्कोर जब आएगा, हाँ, ठीक है, फिर हमारे हाफ ईयरली 11th का स्कोर आएगा, फाइनल 11th का स्कोर आएगा, 12th का स्कोर आएगा, मिड टर्म का स्कोर आएगा, तो हमारी कॉन्क्रीट फाइनलाइजेशन होती जाएगी कि क्या वो सपने हैं जो हम साकार कर पाएंगे. correct. So after the midterm of half yearly, I'll be able to give you a concrete list of university categorized into 3 divisions: dream, reach, safe. ठीक है, that's what you are looking for. I am totally in sync with you. Correct. Dream, reach, safe, ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे. अभी देखो सर, ये जो स्टार्टिंग होता है ना, इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकली इंसान को जब बड़ी चीजों के लिए तैयार करना होता है ना, तो आप टॉप यूनिवर्सिटी ड्रीम से स्टार्ट करो, ठीक है, फिर देखते हैं ना सिचुएशन कैसे इंप्रूव होता है या डिग्रेड करता है, ठीक है, दैट्स हाउ इट इज. अभी कुछ नेगेटिव मत सोचो सर, अभी ये मत सोचो कि हमको सेफ यूनिवर्सिटी चाहिए या वो रखना है या नहीं रखना है. अभी आप इस पे विश्वास करो. लेट मी टेल यू, अगर जो एक्टिविटीज हम इसको बोलेंगे करने के लिए और जिस तरह के इसके मार्क्स है, शी डिजर्व्स टू गेट इनटू अ टॉप नॉच यूनिवर्सिटी. ओके, so there is no doubt in my mind. I have been doing this for 17 years of my life, and I can tell you this girl will get into a top university. Now it is on us that do we really are
in a position to send her to those universities? Or do we require scholarships? Do we require financial aid? Do we require bank loans? It might be that even after getting all that, we are still not in a position. You never know, Right. right? It can. So that ways, I always told you that let's have two options. And this girl will also be very open in her mind that whatever is the situation, I'll take the best call at that moment. That's how it is. There is no grief or grudge about anything. Okay. So we will, with an open mind, looking at the financial status at that juncture, we will decide कि अपन को कहाँ जाना है, and we will all as logical individuals हम बात करेंगे, decide करेंगे. ठीक है, वो होगा 2022 के सितंबर या अक्टूबर में जाकर के. हाँ जी, ठीक है. लेकिन पहले हमें पहाड़ चढ़ने के लिए, पहाड़ चढ़ते कैसे हैं वो तो पहले समझना होगा ना. करेक्ट. गियर्स खरीदने होंगे, गियर्स लगाने पड़ेंगे, शुरू करना होगा, फिजिकली फिट होना होगा, तब तो हम पहाड़ चढ़ेंगे. करेक्ट. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. और इंडियन यूनिवर्सिटीज में भी, जैसे मैंने तुमको बोला कि अशोका अप्लाई करो, फ्लेम अप्लाई करो और ये सब अप्लाई करो, इनके लिए भी प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सर एक और बात, ये जो हम बात कर रहे हैं प्रोफाइलिंग इंपॉर्टेंट है, जो गेयर्स की बात कर रहे हैं, तो वो आपके पूरे प्रोग्राम में 11 to 12 तक या टिल द कॉलेज तक वो एप्लीकेबल होगा ना सर? जी. नॉर्मली प्लान ऑफ प्रोग्राम ऐसा होता है कि उससे इंसान ये समझ पाता है मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, उससे इंसान ये समझ पाता है मेरी इंटरेस्ट क्या है, तीसरा उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, चौथा क्या होता है कि फेदर्स ऐड होते हैं आपके रेज्यूमे में. ठीक है, जो कि सिर्फ एडमिशन तक नहीं, ताउम्र आपके काम आता है. ठीक है, बिकॉज जब आप जिंदगी में पहली रेज्यूमे बनाते हो तो वो सिर्फ आखिरी रेज्यूमे नहीं होता है. दैट कीप्स ऑन चेंजिंग थ्रू आउट योर लाइफ टाइम. But those achievements, they will remain with you for your entire lifetime, right? So this 1.5 year is meant for us to collect those achievements, get those kind of experiences, right? So program 4-5 हिस्सों में divided है. First is knowledge, second is application of knowledge, third is research, fourth is कम्युनिटी सर्विस. ओके, सो ये 4 कॉन्स्ट्रेंट्स में प्रोग्राम डिवाइडेड है. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. जस्ट अ मोमेंट सर. ओके, सो these are the 4 or 5 things that the program will cover. Now how will it cover? So I will assign a mentor who will talk to the child every week and provide inputs regarding tasks. Those tasks will have to be completed in the stipulated time period. It can be 7 days, 10 days, 15 days. There will be interim follow-ups by the second mentor who will push you a little, Spinza. Okay? And then once you've completed, then we sit for the next meeting, get more tasks. Okay, so that is how we go. Okay, so I'll send you एक छोटा सा 8.5-10 मिनट का एक मीटिंग का मैं आपको लिंक भेजूंगा, जो कि आप देख सकते हो. हमारे एक स्टूडेंट के साथ मेंटोर मीटिंग कर रहे हैं, तो उसका आप देख सकते हो कि कैसे बात करते हैं, क्या काम देते हैं, तो यू विल गेट अ फील एंड हैंग ऑफ थिंग्स. ओके, तो वो मैं आपको भिजवा देता हूँ. प्लस आई विल आस्क अंजलि टू शूट यू अ मेल दैट विल हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटायर प्रोग्राम, कि क्या क्या हम उसमें कवर करते हैं. क्योंकि इसमें एप्लीकेशन भी कवर होता है जिसमें काफी सारे स्टेजेस हैं, प्रोफाइलिंग भी कवर होता है जिसमें काफी सारे स्टेजेस हैं. अब वो सब कुछ वर्बली एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल काम है. ठीक है, सो दैट विल कम टू यू ऑन मेल. उसके बाद आपके अगर कोई डाउट्स होते हैं सर, तो फिर मैं और अंजलि फोन पे उन डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, हम उसको सॉल्व. You will be our mentor for the complete 2 years, for the complete 4 years, or sir I'll be the program runner. I am the head of the program. So I have a team of people who work for me. So there is a mentor, there are junior mentors, there is an application mentor separately. वो एप्लीकेशन मेंटर आप दोनों के साथ यानी पेरेंट्स के साथ काम करेगा शुरुआत में, बाद में फिंजा के साथ. और जो प्रोफाइल मेंटर है वो शुरू से फिंजा के साथ काम करेगा.
आपके पास पूरा स्टेटस आता रहेगा हर चीज का। सर सब कुछ एक व्हाट्सएप ग्रुप पे रिकॉर्डेड होता जाएगा, जिसका स्टेटस आपके और मेरे दोनों पास होगा। करेक्ट। प्लस मंथली रिपोर्ट्स आती हैं, हर मीटिंग जो होती है, मीटिंग खत्म होने के साथ ही उस मीटिंग का पूरा रिकॉर्डेड वर्जन आपको सेंड होता है। सो द ट्रैकिंग प्रोसेस इज एक्सीलेंट। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज, राइट? सो एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ, एक छोटी सी बात, जी, if we go for the abroad, जो हमारा प्रोस्पेक्टस खुले हुए हैं, तो वीजा काउंसलिंग जो होती है, वीजा उसके बारे में सब कुछ वो सब एंड तक सर, अगस्त 2020 तक, 2023 तक आप हमारे साथ हो। और जैसे सर समझ लीजिए इफ शी गोज फॉर कनाडा, हाँ, मान लेते हैं कि कनाडा चलेगी, वहां पे जाके कॉलेज से पसंद नहीं आ रहा, मतलब एक बात मैं कर रहा हूँ, तो फिर वो चेंज का ऑप्शन भी आप देते हैं इसमें या? सर करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है सर। वहाँ थोड़ा क्या होता है कि चैलेंज हो जाता है, यूनिवर्सिटी बीच में नहीं चेंज होता, सेमेस्टर के बाद चेंज हो सकता है। तो सर एक कॉलेज देखने के लिए डू वी गेट अ परमिशन टू गो देयर? जैसे हम कॉलेज तो वर्चुअल देखते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखो अभी पैंडेमिक सिचुएशन अगर ठीक हो जाए, हाँ हाँ, तो आप क्या कर सकते हो कि एक 2-3 दिन का या 4 दिन का कैनेडियन टूर भी कर सकते हो। अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, आप कैंपस जाके देख सकते हो, कैंपस में मिल सकते हो। आई हैव स्टेड इन कैंपसेस, ओके, okay, and that's how I get to know that, you know, what campuses what kind of students study, what kind of facilities they have. You will get the experience of your lifetime. राइट, Okay, तो एक बार तो देख के आना चाहिए। देख के, हाँ मैं वही पूछ रहा था आपसे। अच्छा, वन मोर थिंग कि ऐसे मुझे आई हैव हर्ड फ्रॉम माय फ्रेंड्स, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जब कनाडा यूनिवर्सिटी में जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो पेरेंट्स कांट गो एंड स्टे देयर फॉर मोर देन 6 months। इज दैट सो? ऐसी पूछ सर रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है कि आप अगर बच्चे का एडमिशन करा दिया, बच्चे का तो लग गया स्टूडेंट वीजा, हाँ जी, अब आपका तो बार बार टूरिस्ट वीजा लग रहा है। ठीक है, तो टूरिस्ट वीजा एट अ लेंथ 6 months एट मैक्स लग सकता है किसी भी कंट्री में। ओके। फिर आपको रिन्यूअल के लिए वापस आना पड़ेगा, फिर जा सकते हो। तो फिर उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है ना, इसलिए बहुत जबरदस्त कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, बहुत ही अच्छा, जबरदस्त कॉस्ट। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर वो बच्ची कनाडा में है, कहीं बाहर है, which is a few kilometers away from here, so we cannot stay 1 year in that case? रहना भी नहीं चाहिए सर, हम नहीं भेज ही किसलिए रहे हैं? नहीं, मैं एक सर सवाल देखो, आया। रहने के लिए क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कैंपस में रहना है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टे इन रेंटल अकोमोडेशंस, accommodation, ठीक है, एंड यू कैन कीप रिन्यूइंग योर वीजा आफ्टर एवरी 6 months, करेक्ट। ठीक है। बट वो ट्रिमेंडस खर्चे वाला सिचुएशन होता है, हाँ फिर नहीं, वो और बात ऐसा करना मत। मतलब अगर जो इमोशन वाला सिचुएशन है वो चीज समझो। इफ यू आर नॉट इमोशनली रेडी, हाँ जी, both as mother and father, if हाँ you're जी। not emotionally ready, then don't send the child. No, we are almost, और we want उसके the तरफ child, से I भी want। सोचना, हाँ जी, उसके तरफ से भी सोचना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल सोचना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक सोचना है। पड़ेगा। फिंजा, ये लोग तो फिंजा? भगा रहे तुमको, ठीक है, ये तो भगा रहे तुम लोगों को, तुमको यहाँ से। अभी तुम बताओ, तुमको जाना है क्या 4 साल के लिए? याद नहीं आएगी इनकी? सर कुछ नहीं होता। तो उसको ज्यादा इमोशन में पढ़ने का नहीं है। जाना ही है सही। मेरे को जाना है। ठीक है, चलो ग्रेट। The problem is I need to take the counseling then. हाँ, मम्मा को चाहिए। अच्छा I would be I would be taking the counseling from someone then. अच्छा, ठीक है, ड्यू टू इमोशनल फैक्टर्स। Yeah, यही exactly. फैक्टर, और कोई फैक्टर? चलो Because Smita is the only daughter, you know. Hello, just to give you one small thing that although I'm now 40 years old, but I am the only child in my family, and my parents stay in Kolkata. I have traveled across the world. I've stayed at various places, and for the last 20 odd years, I have not stayed in Kolkata for more than 7 days. That too probably once in a year. Okay, you know, parents, that's how they are. For the success of their child, for their lives, you know, they compromise to a huge extent. Ultimately you want to see them happy, that's how it is. But theek hai ma'am, at times what I'll do is I have a psychologist in place, so whenever you feel that there is a need to talk to somebody, okay, so you can have those personal sessions also. Okay. Okay, so that's not a problem. In fact, there are 2 psychologists in the team.
जो इसके चीफ मेंटोर है वो भी साइकोलॉजिस्ट है, जो इसके एप्लीकेशन मेंटोर है वो भी साइकोलॉजिस्ट है. Okay. तो आप दोनों से मिलेंगे, दोनों से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा. जब जिसको यूज करना हो आप कर सकते हो. ठीक है. So no worries. I think for the rest of the questions, we can think about those questions, keep them noted down, and in the next 2 days, probably let's say Tuesday evening, let us connect once again and let us discuss the questions, pertinent जो questions हैं उनको और discuss करते हैं. Right? So I think that will be a great idea. That would be ठीक nice. है? Right. और कोई क्वेश्चन संजय अभी तो दिमाग में आ रहे हैं? फिंजा को अभी जाना है, बस हो गया उसका फाइनल. What is the fee structure वो हम बाद में बात करेंगे. सर मैं वो ईमेल में आपको भेज रहा हूँ सर. मैं ईमेल में आपको भेज रहा हूँ. सर इसमें ऑब्वियसली आपने जो प्रोग्राम बताएंगे जो मेल पे पूरा स्टेप बाय स्टेप होगा, इट विल इंक्लूड ऑल दी जो बूट कैंप्स बोलते हैं, जैसे बूट कैंप्स, इंटर्नशिप्स, प्रोफाइल बिल्डिंग, व्हाटएवर द थिंग्स आर. कुछ आप अभी पहले मेल पढ़ना सर. अच्छा. नहीं, और कुछ ना समझ में आए, ना ही समझ में आए तो मैं तभी पूछ रहा हूँ. हाँ ना समझ में आए तो अंजलि एट योर सर्विस है ना. ठीक है. आप इमीडिएटली फोन कर दो, वो समझाएगी. ठीक है. राइट जी. चलो ओके. नाइस टू हैव अ टाइम. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you ma'am. Thank you. Bye. Bye.